कुछ याद है कल कहाँ तक कंप्लीट किया था? आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्लीट हो गया था ना, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। सर हम लोग कंप्लीट किए थे हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द गवर्नमेंट, यहाँ तक हो गया था ये वाला। अभी गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको शुरू करना था। ओके दैट्स ऑल। और वो जो डायग्राम था वो डायग्राम क्लियर हुआ था? यस सर, हो गया था। You have told me now that sir the diagram is not clear to me. You need to explain it once more. So yesterday I think I have explained you. So यस how सर। in government influences the business, how business organization influences the government. Okay. So now today we're going to start. We're going to start. I think I have completed this one also. Yes, today I am going to start how government influences the business organizations. Okay, now the government attempt to shape the business practices through both directly and indirectly, implementing rules and regulations. The same thing, repeating continuously. The government attempt to shape the business practices through both directly and indirectly, implementing rules and regulations. For any organization, for any business organization, there is a, what you can say, directly and indirectly, uh, the government used to implement the rules and regulations for that particular business. Now the government most often directly influences the organization by establishing regulations, laws and rules that dictate what organizations can and cannot do. Now most oftenly what we have been seen that government used to influence those organizations by establishing regulations, laws and rules that dictate what organizations can and cannot do. Now why the government used to make the or implement any rules and regulations? There is one, I have already explained you the one part, that government used to create rules and regulations for any organizations that just to implement the business, just to implement the taxes, and more profitable for the country. Okay, now there is another part. The government used to influences the organizations by rules and regulations. There is one, uh, another part is that is government would detect, government used to check or detect what organizations can and cannot do. ऑर्गेनाइजेशंस, कोई ऑर्गेनाइजेशंस को अगर ये पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम इंप्लीमेंट करवाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कितने हद तक वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन भी गवर्नमेंट करते हैं। तो ये भी एक तरह से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को एनहांस करने के लिए। The next one is to implement legislations. The government generally create special agencies to monitor and control certain aspect of business activity. Okay, as I have told you, government सिर्फ और सिर्फ rules regulations यही implement नहीं करते हैं। The government use generally create special agencies, as I have told you, CBI, ED, Enforcement Directorate, some agents are there, some CIDs are there, special observation or special agencies, just to monitor and control, just to monitor and control certain aspect of business activities. Now suppose if somebody abide those rules and regulations of any business organizations, abide those rules and regulations, that ultimately what will happen, ultimately what will happen, they start to do some illegal businesses. Okay, they start to do some illegal operations. Okay, for that reason government is always very strict and very monitoring, always monitoring those organizations who are not influencing or not implementing government rules and regulations, certainly. Okay, for that government used to influence those. Now फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल भी यहां पर दिया गया है। टू इम्प्लीमेंट लेजिस्लेशन द गवर्नमेंट जनरली क्रिएट स्पेशल, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैंडल सेंट्रल बैंक, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटर, लेबर कमीशन, securities and exchange commission and much more.
क्या क्या एजेंसीज है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर बिजनेस, फॉर सर्टेन बिजनेस एनवायरमेंट, okay, for smooth running of the business, what they used to do, some agencies are there, suppose for to handle central bank, suppose to handle central bank, Reserve Bank of India monitor the monetary transcriptions or monetary transformations of central banks, or ठीक है, or any other bank, private bank. Now for food and drugs there is administrator, food and security inspectors are there, okay, labor commissions are there, securities are there, security exchange boards are there। security exchange boards क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन टैक्स टाइम पे नहीं देते हैं उनको ये फिर मॉनिटरिंग करते हैं, उनको ये फिर हैंडल करते हैं। तो सर्टेन agencies are there, okay, so these are the specific agencies which influences the business organizations by government authorities। The next one is these agencies directly create, implement laws and monitor its application in the organization। ये agencies का काम क्या होता है? Certainly agencies का काम होता है कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करना और स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना कि कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो कर रहा है और कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो नहीं कर रहा है। सो देयर work is to observe those things। Now government sometimes take an indirect approach to shaping the activities of business। समटाइम्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट समटाइम्स टेक एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू शेपिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। These are also done by implementing laws or regulations, but they are not always mandatory, okay। now यहाँ पर क्या बोल रहा है, कभी कभी गवर्नमेंट टेक एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू शेपिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, ओके, organization। These are also done by implementing laws or regulation, but they are not always mandatory। कुछ कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ कुछ ऐसा बिजनेस होता है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाया जाता है, गवर्नमेंट क्रिएट करता है उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए, बट व्हाट विल हैपन, जस्ट टू शेप इट्स बिजनेस। वो रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाया जाता है जस्ट टू शेप द बिजनेस, बट समटाइम्स द गवर्नमेंट what used to do, they doesn't want to, they implement the rules and regulation, वो rules and regulations वो बनाते हैं, बट वो स्ट्रिक्टली उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उतने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट ये जानते हुए भी वो उस चीज को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर ईडन गार्डन, आप, मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, आप अगर ये पोर्ट ब्लेयर चले जाइए या फिर जहां पर शिप का आना जाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ईस्टर्न जोन जोन जैसे कैलकाटा गार्डन ब्रिज चले जाइए, वहां पर जो कार्गो शिप आते हैं, तो बाहर से जो भी वट एवर द कार्गो शिप यूज टू कम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंडिया, they used to stay there। The government knows that the ships or the consignments or the containers which are coming from the outside of Indian subcontinents, they need to pay a high taxes to the government, but the government creating, though government create the rules and regulations for the those consignment, but still government doesn't take those taxes from that particular consignments or that particular cargoes and all. Why? Just to create a good relationships, just to maintain a balanced relationship in business between some other countries, between India, okay। रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओवरलुक किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है। उसका रीजन ये है, जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस इक्विलिब्रियम, जस्ट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। अगर हर एक जगह पर कुछ ना कुछ कभी कभी ये टैक्सेस का जो बोझ है वो हर एक कंट्री के साथ ये अगर लिया जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कानून की वजह से दूसरे के साथ, जो दूसरे कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग होता है वो कभी कभी ब्रेक हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जो क्रूड ऑयल परचेज करते हैं फ्रॉम रशिया, नाउ क्रूड ऑयल्स आर कमिंग फ्रॉम रशिया, we have a very good relationship with the Russia, you know, Vladimir Putin and Narendra Modi ji
have a very good friendly relationship between these two countries. Between these two president and prime minister have a very good bonding between these two. Now, Narendra Modi never ever going to want that to break those relationship by abiding or by circulating the rules and regulations that whenever the consignment coming from Russia, they need to impose high taxes. ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि रशिया जो क्रूड ऑयल भेज रहा है वो हमारे लिए ही भेज रहा है। अगर वो पोर्ट में खड़ा रहे तो हमें टैक्सेस देने की कोई क्या जरूरत है। तो कुछ कुछ कभी कभी ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने के लिए या फिर बैलेंस बनाने के लिए कभी कभी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट समटाइम्स ट्राइज टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज बाय देयर टैक्सेस एंड कोड्स। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। ये एक लाइन पे लिखा हुआ है, मैंने उस चीज को सबसे अच्छी तरह से एनहांस करके आपको बताया है। Then next, the government could give tax incentive to companies that have an environment-friendly waste management system in production factory. Okay, now this is a very good example of this. Now in Tata Steel Plant, there is a very good, you can say, the companies have a very good waste management system. Okay, factor. They have a very good waste management system. Okay. Now, it's because of this good waste management system. Sometimes government used to used to मतलब free the taxes. Okay, or just to give some more incentives on the taxes the companies or organization used to pay. मैं इसको अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर जमशेदपुर में हो तो आप अगर टाटा स्टील प्लांट में कभी गए हो तो वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर। Okay, lot of plastics waste material are there. By inputting those chemicals on those plastics, the Tata Steel Plant company use some crude oil just to make a roads, smooth running of roads. Okay, just to make a new roads. Okay, इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है, आप अगर कदमा की फार्म एरिया रीजन में चले जाइए, उस फार्म एरिया रीजन में आप जाइएगा तो देखिएगा वहां का जो रोड बना हुआ है वो कहा जाता है, कहा देते हैं, सच्चाई है, वहां पर लिखा हुआ है ये दिस रोड इज मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ओके, तो वो रोड जो बनाया गया है पूरा प्लास्टिक वेस्ट से उसे बनाया गया है। तो कभी कभी ऐसा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का इनिशिएटिव लेता है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, तो कभी कभी गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्सेस जो देता है उसके ऊपर बहुत सारा इंसेंटिव कंपनी को देता है, जस्ट एज अ गिफ्ट, बिकॉज द कंपनी इज लुकिंग आफ्टर द एनवायरमेंट। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। और समटाइम्स क्या करते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स कुड बी प्रोवाइडेड टू कंपनीज दैट हैव established their productions facilities in a less developed region in a country. As a result, more often the business would probably do so. Sometimes कभी कभी क्या होता है, government used to put more incentive on tax incentive on those some companies where the company used to establish and promote their productions in a very लेस डेवलप रीजन। कोई भी ऐसा गांव एरियाज हो जहां पर उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो कभी कभी कंपनीज वहां पर भी जाके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, और जिसकी वजह से कंपनी ये देख के ना बहुत सारे इंसेंटिव्स उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बिजनेस को देते हैं जो कि वो उस गांव में जाके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। ये भी एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसीज है ताकि स्मूथ रनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू what you can say the influences of business organizations by the government. Okay, is it clear to you, Madhusmita? And still if you have any doubt you can ask me. I think today my voice is very clear to you. Okay, Yes, sir. कोई डाउट है अभी तक जो No, मैंने sir. समझाया है? ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, इस एग्जाम्पल्स को अगर आप आंसर प्रेजेंटेशंस के तरफ टाइम अगर आप इसको यूटिलाइज करते हो, लिखते हो इस चीज को, तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट ए गुड मार्क्स, बिकॉज लगेगा आपको कि जो भी आंसर्स द एग्जामिनर जब रीड करेगा उसको लगेगा कि दिस कैंडिडेट
made a research on these things. Okay, that's why he or she has used this type of an examples. Okay, now come to the next part, that is constitutional provision affecting business. Okay, check the spelling, affecting, not affecting. Constitutional provision affecting business, not affecting business. There is a difference between affecting and affecting. The first one is equality of status and opportunities. Equalities of status and opportunities. According to this concept, every businessman should believe and give equal opportunity to others. This can be achieved through eradications of poverty. This doesn't mean winning gap between rich and poor. Okay, now constitutional provision affecting business. Some constitutionals assume means the constitutions means the laws. Constitution simply means the laws. So what are the laws which affecting the business? Number one is equality of status and opportunities. Every business organizations or whatever the laws that has been created by the government should be equally distributed and should be equally followed. Okay, every business organization should follow the rules and regulation, and government also keep in mind that whatever the rules the government is creating, it should be equally status, and each and every law should be equally distributed with equal opportunities. Okay, for an example, there shouldn't be any discriminations of rich and poor. There should not be any eradications of poverty. Okay, there should not be any eradication of poverty. It doesn't mean that there should be a rich organization or poor organization. इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया गया है. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आप इस चीज को फर्ज करो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है. फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील प्लांट इज अ बिग बिग वेरी बिग जाइंट ऑर्गेनाइजेशन. स्टील का सबसे बड़ा जाइंट माना जाता है. लक्ष्मी मित्तल के बाद या लक्ष्मी मित्तल के पहले सबसे पहले होता है टाटा स्टील. उसके बाद लक्ष्मी मित्तल का स्टील, मित्तल स्टील. उसके बाद जिंदाल स्टील. ये जो स्टील का है, दीज आर ऑल द बिग जायंट्स ऑफ स्टील. तो ये हो गया लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ उसके बाद भी छोटा मोटा स्टील कंपनीज है. तो कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में ये कहा जाता है कि एवरी लॉ शुड बी हैव इक्वल शेयर, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्वली बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन एंड इक्वली शुड बी फॉलोड. ऐसा नहीं कि वो बिग जायंट्स है बोल के उसको सबसे ज्यादा टैक्स लेविट किया जाएगा या उसको कम टैक्सेस लेविट किया जाएगा या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशंस के बाहर होगा. ऐसा नहीं है. ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. लॉ के अंदर सब कोई इक्वल है. आप जिस तरह लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को आप अपने जिस तरह से लॉज में बांधते हो, इसी तरह मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी लॉ के इख्तियार में आना पड़ेगा. That is called equal status and opportunities. Okay, the next one is, it means that every citizen has access to shop, public restaurant, hotel, places of public uske baad entertainment, etc., and is free to use well, tanks, road, and places of public resort maintained state fund. This line is very much clear to you. I don't think it should be explained to you another way. Every citizen has an equal right. Maybe the particular citizen is a rich, maybe the particular region is poor, maybe any person is rich or poor. It doesn't mean. Each and everybody should be equally distributed. Everybody has the right to go to the shop. Everybody person, single person, has the right to visit the public restaurant, hotel, places of public. Everybody, every single person, from the beggar to the rich man, they have an equal opportunity to visit every places. Equal opportunities. ठीक है, लॉस तो बना हुआ है. ठीक है, एक भिखारी का भी जितना हक है इस सिटी इंडिया के सिटीजन पे रहने का, उतना ही हक एक अमीर इंसान को भी है. ठीक है, दिस इज द कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. नेक्स्ट है in the employment aspect, the appointment of officers under the state also equal equal opportunity shall be provided to all citizens, and no person shall be denied employment, religion, race, caste, sex, descent, and place of birth, resident, or any of them.
दिस और ऑल द श्रीपिता, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल का एक पार्ट है। आप इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्ट में भी कहा जाता है, जब आपको एम्प्लॉयमेंट आपको जब मिलता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, द अपॉइंटमेंट टू ऑफिसेस अंडर स्टेट ऑल्सो इक्वल अपॉर्चुनिटी शैल बी प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। एवरी सिटी, आप चाहे इंडिया के बाहर जाके काम कर रहे हो, सॉरी कोई दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हो, चाहे आप दूसरे रीजन में जाके काम कर रहे हो, आपको इक्वली सिटीजनशिप मिलेगा, आपको इक्वली आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, आप इक्वल रेसिडेंस, इक्वल प्लेस ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, आपका जेंडर, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। आप उस लॉ के अंदर इक्वली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है, मिलेगा, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन बिहाफ ऑफ दैट। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के एक इन्फ्लुएंसेस है, जो कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि आप उस कंट्री में जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, या फिर अगर आप वहां एम्प्लॉयमेंट करते हो तो आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से आप जो भी टैक्स गवर्नमेंट को पेड करते हो वो भी एक प्रॉफिट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हर एक के लिए मतलब लॉज एंड रूल्स बनाया गया है। नाउ, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस और सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, जैसे मैंने पहले बताया, सेम नेक्स्ट पॉइंट में है। एवरी सिटीजन शुड हैव द फ्रीडम टू रिसाइड और सेटल इन एनी टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ इन इंडिया। आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसके बाद फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, आपको फ्रीडम दिया जाएगा टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई कोई भी प्रोफेशन में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको फ्रीडम दिया जाएगा, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, लेकिन एक बात है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। by breaking rules and regulations, then you will be uh, sent into jail। आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदा या कानून में रह के आप ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशनल स्टडीज, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, वट एवर यू कैन डू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, द राइट टू फ्रीडम इज ऑल्सो अप्लाइड इक्वली इन बिजनेस। देखो, राइट टू फ्रीडम जो है वो इक्वली जैसे सिटीजनशिप में रहा जाता है, मिलता है, the same way the right to freedom is also applied equally in business। बिजनेस में भी राइट टू फ्रीडम अप्लाई किया जाता है। द बिजनेसमैन कैन एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स फ्रीली टू द गवर्नमेंट एंड कैन गेट अ सोल्यूशन टू इट। Any businessman can express their feelings, any businessman can share their problem freely to the government। आपको पता है कि नहीं मधुस्मिता, मुझे नहीं मालूम है, गवर्नमेंट ने इस तरह का जो भी है एक पोर्टल तैयार किया गया है। देयर इज अ फ्री पोर्टल इज देयर वेयर यू कैन अपलोड योर कमेंट्स, where you can upload your queries, where you can upload your problems, you can share directly with the government। एक apps मिलता है अभी गवर्नमेंट, अभी nowadays in 2023 2024 new, I'm just telling you, there is an app, okay, from the Google Play Store you can download an app, I forgot the name of that particular app। if you download those app, there are lot of sections are there, ठीक है, इन particular sections you can go to visit those sections and you can upload your thoughts, you can share your feelings about your country, about your city, you can share your what you can say, you can share your problems around your environment, if you have any problem with your environment, if you have any problem with your neighbors, not neighbors, if with any problem with anything, you can share, upload your thought, perception, your feelings, your stories to that app, okay, and definitely within to 7 days, and as they said, I have never used those, but as a 7 days they try to contact with you and they try to solve your problem with you। ये एक एप्स आया है, तो बहुत सारा इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट इसको ले रहा है ताकि वो बहुत हद तक वेरी क्लोज वो सिटीजनशिप क्लोज हम जैसे साधारण इंसानों के पास पहुंच सके, ठीक है, बहुत सारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। आज से पहले 10-15 साल देखो पहले, मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी एप्स या ऐसा टेक्नोलॉजीज का इतना अपग्रेडेशंस नहीं हुआ था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेडेड हो गया कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात कर सकते हो, अपना बात रख सकते हो, अपना कुछ भी योर थॉट्स है आप उसको गवर्नमेंट के सामने पहुंचा सकते हो।
Lot of facilities are there nowadays. Okay, the next one is right against exploitation, Article 23 and 24. Business environment mein, Madhusmita, I'm telling you, you need to learn the articles. Article 156, Amendment A, Section 104. What is the article written over there? तो इस तरह का questions definitely going to ask you, आ सकता है. अगर नहीं तो आप जब इंटरव्यू दोगे एज अ रिकॉर्डिंग एज बिजनेस एनवायरनमेंट के रिलेटेड, जो भी एनवायरनमेंट आप एमबीए के रिलेटेड आप जो भी इंटरव्यू दोगे, तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू आस्क. Okay, so right against exploitation, it is in the article 23 and 24. Remember one thing, article 23 or 24 deal with the right against exploitation and help to prevent exploitation of weaker sections of the society by unscrupulous persons as well as a state. Article 23 prohibits prohibits the traffic in human beings, involuntary works without payment, and other forms of forced labor. Okay. Article 24 prohibits the employment of child below 14 years of an age in factories and hazardous occupations, employing women employees in night shift in factories, etc. So Article 23 and 24 is very, very important, and this two article is related to business. This two article 23 and 24 is related to business. Where in Article 23, you need this Article 23 prevent the exploitation of weaker section of the society. गांव देहाती इंसान को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, आर्टिकल 23 में ये राइट्स लॉज आता है कि आप बिना जानकारी के कोई भी वीकर सेक्शंस के, सोसाइटीज के वीकर सेक्शन या वीकर पीपल को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी फैक्ट्रीज अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो गांव में, तो आप बेवकूफ बना के उसके जमीन को आप हड़प नहीं सकते हो. आपको फिर अगर आप ऐसा करते हो तो आर्टिकल 23 के अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में केसेस हो सकता है, चार्जेस आपके ऊपर आ सकता है. तो आर्टिकल 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज रिलेटेड टू बिजनेस. आर्टिकल 24 में कहा जाता है, आर्टिकल 24 stop employing employment of a children below 14 years. Lot of things are there. I don't know whether still now it has been followed or not, because I have seen in Jamshedpur only lot of factories are there in under contractual basis na, the children below 14 15 14 years of children na, they are working over there. Though the law is there, but nobody is taking nobody is accepting those laws. Okay, nobody is making any complaint against those laws. Okay, against those actions, illegal actions. Okay, nobody is trying to raise their hand against those illegal actions. आप कोई भी एक बच्चे को, फिर 14-15 साल के बच्चे को, 13-14 ईयर्स के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हो. ठीक है, लेकिन आजकल अभी भी मैं देखता हूँ ये सब चीज होता है, लेकिन कोई इसका वॉइस रेज नहीं करता है. अगर रेज किया जाता है तो उसे दबाया दिया जाता है. पुलिस प्रशासन पैसे खा लेते हैं और उस चीज को, केस को दबा दिया जाता है. लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 23 एंड 24 रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न. अच्छा, एक और चीज देखो बताया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के बाद, इस संदर्भ में, एम्प्लॉइंग वुमेन in the night shift is very very is strictly prohibited, especially in the factories, especially in any organizations. Women are not able to do night shift according to article 24. Very very important. लेकिन आजकल क्या है कि ये चीज होता है. आप अगर कैलकाटा सॉल्ट लेक में चले जाओ, तो वहां पर जितने भी कॉल सेंटर्स है, आपको वेदल मोड़ में आपको जितने भी कॉल सेंटर्स मिलेंगे, देखिएगा वहां पर आज भी, अभी भी बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और रात को नाइट शिफ्ट करते हैं, काम करते हैं कॉल सेंटर्स में, जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, सेल्फ डिपेंडेंट इसे कहते हैं, है ये सब चीज. लेकिन they are not following those rules and regulations, and they are not following the, what you can say, they are not using those rules and regulations, और कोई भी इस चीज का आवाज नहीं उठाते हैं. ये एकदम सच्चाई है. आर्टिकल 30 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है आर्टिकल 30 में? आर्टिकल 30 confers upon a minority community that the right to establish an administrator educational
institution of his choice. Of course, this is very much important. आर्टिकल 30 ये कहता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाना चाहिए. माइनॉरिटीज कम्युनिटीज कौन कौन है? जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट. इससे भी नीचे एक और होता है हरिजन्स. शेड्यूल कास्ट से भी नीचे एक और आता है कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटीज, जिसे हम हरिजन कहते हैं. तो इससे पहले, आज से लगभग बहुत साल पहले क्या होता है, हरिजन्स को अलाउ नहीं किया जाता है. दे आर नॉट अलाउड टू गो टू द हाई सोसाइटीज, दे आर नॉट अलाउड टू गो टू द गुड स्कूल्स, दे आर नॉट अलाउड टू गो टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल. लेकिन आर्टिकल 30 अभी इस चीज को बहुत सारा चेंजेस किया गया है. एंड आर्टिकल 30 में अभी ये कंपल्सरी हो गया कि अभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को आप इक्वल स्टेटस, इक्वल लॉ के अंदर में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना ही पड़ेगा. अगर कोई, suppose someone is from a very rich family studying in good colleges or good school, that harijans, matlab the community of harijan also have an equal opportunity, have an equal right to read those particular or high colleges. Okay, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ. रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था. धीरू भाई, मुकेश अंबानी, आप जानते होंगे कि मुकेश अंबानी के बहुत बड़ा एक स्कूल है, वेरी फेमस रिलायंस स्कूल करके, एक बहुत सारा स्कूल है जिसे शायद नीता अंबानी चलाती है. बहुत सारा ब्रांचेस है इस चीज का, बहुत सारा ब्रांचेस है उस स्कूल का. तो नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने एक मतलब जस्ट इन द ईयर आफ्टर कोरोना उन्होंने एक इनिशिएटिव किया है कि 5% to 10% स्टूडेंट्स जो है, दोज हु आर फ्रॉम बैकवर्ड कास्टेड, दे आर गिव दे आर अलाउड टू हैव अ फ्री एजुकेशन टू दोज स्कूल्स एंड कॉलेजेस. वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस इतना हाई है कि आप कोई भी सिंपल इंसान उस अफोर्ड नहीं कर पाएगा. लेकिन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने ये मतलब ये अभी एक स्टेप्स लिया है आफ्टर कोरोना एंड ऑल, कि 5 to 10% of students who are below minorities, okay, below the society of those communities, they are now allowed to read in those schools and colleges. Okay, ये तो आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 30, these three articles are very very important. A notable features of educational and cultural right is that, unlike other fundamental rights, it is not subject to any restriction except that the state can make special provision for the advancement of any social and educationally backward classes of citizens. जो मैंने पहले बताया था सेम वही चीज नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है. देखो क्या लिखा है. A notable features of the educational cultural right is that, unlike other fundamental right, it is not subject to any restriction except that the state can make special provisions for the what you can say advancement of any socially and educationally backward classes of the citizens. Nowadays it is very compulsory that a reservation is there for every SC, ST, OBC categories. 5%, 10%, 15% reservation is there, and according to those reservations quota, every citizens who are backward caste, they can have the equal opportunities to get educated in schools and colleges. Okay, now economic importance. नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. मधुस्मिता, ये आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा है अभी, इज इट क्लियर टू यू? एनी डाउट? these articles are very very important. Okay, article 23, 24 and 30. Any doubt to those articles? No, sir, it is clear. एब्सोल्युटली क्लियर ना? आज तो वॉइस Yes, ब्रेक नहीं हो रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. चलो ठीक है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. नाउ चेक व्हाट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. The economic importance of directive principles of state policies. What is the directive principle? Economic importance of directive principle of state policies is, number one, to provide adequate means of livelihood for all citizens. To provide adequate means of livelihood for all citizens. Two, second, to secure equal pay for work to both men and women. Okay,
to protect the workers, especially children, okay, to regulate the economic system of the country, that is does not lead to concentration of wealth and means of productions. Number four, no, sorry, number five, to make provisions of securing right to work, to educate, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and similar other cases. Now, number six, to ensure a decent standard of living and facilities of leisure for all workers. So, these are the six directive principle of state policies. This directive principle of state policies comes under economic importance. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर में ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आता है। सबसे पहले क्या आता है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। सबसे अच्छा लाइवलीहुड के लिए जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडियन है उसके लिए एडिक्वेट मींस ऑफ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। good electricity, good transportation, good roads, good educations, good quality of food, standard of living should be really very high, shopping malls, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं। नाउ आपको एक शॉपिंग मॉल मालूम है ना, वो पीएम मॉल, जो कि बिष्टुपुर और आदितपुर के जंक्शन में एक बना हुआ है पीएम मॉल। नाउ पीएम मॉल is going to shift, is going to reopen another franchisee in the Tata station areas. Okay, the place has been chosen now in the Tata Steel. In Tata Station, there will be a new projects of PM Mall where the facilities of to provided basically to the what you can say, to the passengers who are running every day from one station to another stations. Good accommodation, good accommodation of foods, good quality of foods, good quality of clothes, blanket, each and everything, yeah, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में पहला जो अमेंडमेंट है वो ये है कि आप हर एक फैसिलिटीज सिटीजन्स को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद देखो एक वर्ड लिखा है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशियंट। आपको सफिशियंट फैसिलिटीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ओके, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नंबर वन कंडीशन। नंबर टू, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर वर्क टू बोथ मेन एंड वुमेन। आज से लगभग इन बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, okay, there was no equal pay or equal rights given to the men and women. Okay, women are deprived of from lot of facilities. Okay, but now in 2024, as to 2023 ka last hai, but the new days, in the new generations, there is an equal opportunities, equal pay opportunities for both men and women. अभी एक नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि जो सबमरीन होता है, आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, सबमरीन जो होगा नाउ, जो जो सबमरीन क्राफ्ट होता है जिसमें से फायरिंग होता है, वो एक इस बार नरेंद्र मोदी जी ने एक मतलब महिला को चांसेस दिया है। ओके, कुछ कुछ जो एयरक्राफ्ट होता है, फाइटिंग एयरक्राफ्ट, नाउ द वुमेन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू मेन टू रन और टू फ्लाई द फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स। ये 2024 से इस लॉ को इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक हो, देखो देश कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दीज ऑल कम्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, स्पेशली चिल्ड्रन। मुझे तो नहीं लगता ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एवरी वर्कर शुड बी प्रोटेक्टेड, एवरी वर्कर्स शुड बी वर्कर्स का हेल्थ, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, फ्री इंश्योरेंस, ओके, timely wages, okay, after the retirement facilities, each and everything should be provided, and especially children's। आपको मालूम है टाटा स्टील प्लांट ने एक स्टील सिटी हॉस्पिटल ही खोल दिया है। they have an hospital where the everybody, even their workers of Tata Steel Plant, not only workers of Tata Steel Plant but their families, children are also getting the equal treatment from those hospitals. Okay, so this is
comes under directive principle of state policies. उसके बाद number 4 point is to regulate the economic system of the country, that it does not lead to concentration of wealth and means of production. क्या बता रहा है? To regulate the economic system of the country, that it does not lead to concentration of wealth and means of productions. Okay. एक और important directive principle of state policies क्या है कि a government should regulate economic system of that country, of every country, that is not leading to the concentration of wealth and means of production. बहुत सारे ऐसे states जो है जो पिछड़ा हुआ है, not being in a standard of एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो इकोनॉमी जो होता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होता है, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि जो भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो एवरी स्टेट के लिए वो बराबर हिस्से में बटा जाए। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड रिलीज करते हैं एवरी ईयर, द गवर्नमेंट इज रिलीजिंग फंड and every state is getting those funds, and those funds generated, and those funds are being circulated for the benefits of the normal common citizenship. ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल में पावर में आते हैं, वो एवरी ईयर फंड रिलीज करते हैं फॉर कॉलेजेस, फॉर एजुकेशन, फॉर स्कूल, लॉट ऑफ फंड्स आर बीइंग गिवन टू एवरी स्टेट्स। वो स्टेट के प्राइम मिनिस्टर को या स्टेट के जो अथॉरिटीज है उनको वो फंड रिलीज कर देते हैं, और उस फंड को क्या करते हैं गवर्नमेंट, जैसे जिसका सिटीजन्स है उस कंट्रीज में उस फंड को एलोकेट करते हैं, रिलोकेट करते हैं, और फिर वो सप्लाई करते हैं और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये पॉलिसीज जो है ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर में आता है। नेक्स्ट है टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ unemployment, old age, sickness and similar other cases. Definitely directive principle of state policy secure करता है right educations, right to work, right to public assistance, and also old unemployment, those who are unemployment, the government has the right to create an employment for those unemployment people, and if they are not able to get the work properly, the government now providing fund to those unemployment. आपको पता है बहुत सारी ऐसे स्कीम है जिसके अंदर में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको अभी मंथली, एवरी मंथ दे आर गेटिंग 2000 1800 इन मंथ। ठीक है? ऐसा बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम है। ठीक है? ओल्ड एज, अभी जैसे पहले ओल्ड एज के लिए कुछ भी नहीं था, ओल्ड एज जो होता है पेंशनर्स, तो वो जो काम करते हैं गवर्नमेंट में उसके लिए पेंशन था, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या कुछ भी काम नहीं करते उसके लिए क्या है, उसके लिए भी अभी गवर्नमेंट ने राशन, फ्री राशन कर दिया है, 500 रुपीज। बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जिसमें हर एक मंथ 1000 1500 टू एवरी ओल्ड एज को मिलने वाला है। ठीक है? जिसे हम बेकार भत्ता कहते हैं, बेकार भाता कहते हैं। ठीक है? तो ये सारा बहुत सारे स्कीम अभी गवर्नमेंट स्टार्ट किया है। ये सारा कुछ जो होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर में आता है। फिर सिकनेस, किसी को बुखार हो गया है या किसी का तबीयत बिगड़ गया है तो उसके लिए हेल्थ हेल्थ का भी बहुत सारा स्कीम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो कैलकाटा रीजन में एक कुछ, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर हेल्थ कार्ड, एवरी सिटीजन्स को वो हेल्थ कार्ड मिलता है। अगर आप वो कार्ड बनवा लेते हैं तो उस कार्ड की मदद से चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल मिडिल क्लास हो, रिच के लिए तो वो तो एफोर्ड कर ही सकते हैं, लेकिन फॉर फॉर पुअर ओनली वो हेल्थ कार्ड दिखा के आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारा स्टेट इस चीज को इनिशिएटिव है। जैसे उत्तर प्रदेश, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उन्होंने उन्होंने क्या किया, जैसे मिड डे मील, they used to provide every students a midday meal, though it is a private sector or private colleges or private schools or government school, they provide a midday meal. Midday meal is compulsory in Uttar Pradesh, and what they used to serve in the midday meal, you're going to shock. They used to serve fruits, they used to serve vegetables, they used to serve soybean, eggs, rice, chapatis, dal, a very good and healthy meal they are providing to the each and every student. And apart from that, for old age they are providing pension scheme of 1500 rupees every month, every old age,
they are getting, and apart from that they are getting the facilities of a treatment, free treatment. Okay, so these are the schemes now government is running, and these all schemes are comes under the directive principle of state policies. Okay, to ensure decent standard of living and facilities of leisure to all workers, it is compulsory for every government to look after its own state and own citizens. Am I clear? Madhusmita, कोई doubt है? Any questions? Any doubt? Any points which you need to explain me once more? नो सर। Is it? No ना? नो सर। समझ में आया है? हाँ सर, ये आर्टिकल्स जो है इधर उधर तक समझ में आए हैं। Okay, very good. How many articles are there? If I ask you, can you answer me? 23, 24, Article 30, and Directive Principle of State Policies. These यस are the सर। four important articles are there. Okay, so be careful while reading these articles. Okay, देखो नेक्स्ट है constitutional provisions regarding trade, commerce and intercourse within the within the territory of India. अब देखो आर्टिकल्स कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट में, कुछ लॉज जो है वो इंपॉर्टेंट लॉज है, आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 301 to 307 of Constitution of India deals with the constitution provides regarding provisions regarding trade and commerce. So article 301 to article 307, this constitutions or, or this provisions related to trade and commerce, always remembered. May you're going to get multiple choice of questions. These questions are very important. What article 301 and 307 constitution of India deals with? Trade and commerce. Okay, the farmers of Indian constitutions were fully conscious of the importance of maintaining the economic unity of Union of India. Now, this constitution, this article 301, 307 deals with trade and commerce, and it also deals with the constitutions with the farmers, regarding the unity, regarding maintenance of economy in the unity of India. ओके, आर्टिकल 301 एंड 307 ये डील करता है ये चीज के लिए, ठीक है। नाउ फ्री मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया was essential for the economic unity of country which alone could sustain the progress of country. आर्टिकल 301 टू 307 में एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है जिसमें से हम कोई भी गुड्स को फ्री मूवमेंट कर सकते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स थ्रू वन कंट्री टू अनदर कंट्री, थ्रू वन टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कैसे बताऊं, सपोज ये शायद फैसिलिटीज इंडियन रेलवेज को दिया जाता है। जैसे रेलवे जो होता है, रेलवे के जो भी वर्किंग होता है, जो भी रेलवेज में काम करते हैं, उनको एक प्रोविजन मिलता है जब भी वो ट्रांसफर होता है कोई एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके जो घर के जो सामान है, वो सामान जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो इसका जो पैसा बनता है वो गवर्नमेंट जो रेलवे होता है वो बेयर करता है। दूसरा बात है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, बाय रोड अगर जाता है तो ठीक है गवर्नमेंट तो पेड करता है, नहीं तो क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या करते हैं एक फ्री जो गुड्स वैगन है वो भी प्रोवाइड करते हैं। जो सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल है, कोई ऑफिसर है, अ बिग रेपुटेड ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे इज देयर, नाउ व्हेन दे आर ट्रांसफरिंग, ना व्हेन दे आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, one state to another state, what they used to do, the railway provide the facilities to those particular officer by providing the goods wagon. In those goods wagon, the officer can transfer his household goods from one state to another state, ठीक है, ये दिया जाता है। तो ये सारा कुछ जो होता है, ये आर्टिकल्स 301 टू 307 के अंदर में ये प्रोविजंस प्रोवाइड किया जाता है। Prior to the integration of India and enforcement, the new constitution
there were in existence a large number of Indian states which, in exercise of their sovereign powers, had created customs barriers between themselves and the rest of India, thus hindering and several points which constituted the boundaries to those Indian state the free flow of commerce. Okay, एक बार इसको और पढ़ता हूं. Prior to the integration of India, you know what's the meaning of integrations? You know what is the meaning of integrations? Integrations का मतलब है common. So prior to the common of Indian and enforcement, new constitution there were in existence. एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया है 300 आर्टिकल 301 एंड 7 में. क्या है उसमें? ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टेट which in exercise of their sovereign power had created customs barriers between themselves and the rest of India, thus stopping, hindering का मतलब stopping, several points which constitute the boundaries to those Indian state the free flow of commerce. Okay, एक नया रूल्स कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल फॉलो किया गया है जिसमें से जो भी पावर रहता है, इन जो भी स्टेट का पावर रहता है, वो क्या करते हैं, एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं. जस्ट क्रिएटेड उस पावर को, सॉवरेन पावर को यूटिलाइज करके वो एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं बिटवीन देमसेल्फ एंड द रेस्ट ऑन. वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं. व्हाई दे यूज टू क्रिएट द बैरियर? जस्ट टू स्टॉप द इलीगल वे ऑफ ट्रांसफरिंग the foreign exchange goods from one country to another. And by using this method, by using or utilizing this sovereign power, sovereign force, what will happen? The free flow of the business, the free flow of the business, or you can say the legal way of free flow of business is more and more. इज मोर एंड मोर. जैसे आपको पता है कि कुछ कुछ ऐसे स्टेट में है जहां गो माता, गाय माता को जो है मतलब एक स्टेट से दूसरे बॉर्डर पर ट्रांसफर किया जाता है. वो इलीगल तरीके से, वो इलीगल तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट को पार किया जाता है. लेकिन अब क्या करते हैं, स्टेट अपना पावर को उस जगह पर वो बैरियर क्रिएट कर देता है कि नहीं, आप मेरे स्टेट से दूसरे स्टेट अगर जाओगे तो आपको इस, ये जो आप क्या लेके जा रहे हो ये लीगल है कि नहीं, इसका पेपर वर्क सही है कि नहीं, आप कितने टैक्स पेड करके गवर्नमेंट को ये लेके जा रहे हो सामान, ये सारा कुछ जो है आपको दिखाना पड़ेगा. अगर सही है, पेपर वर्क ईच एंड एवरीथिंग सही है, तो वो फिर आप आगे ले जा सकते हो. अगर नहीं तो आपको वो स्टॉप वहीं पर रोक दिया जाएगा. ये करने की वजह से, सॉवरेन पावर यूटिलाइज करने की वजह से स्टेट्स अभी इतना क्लियर हो गया है कि आप अगर इलीगल तरीके से कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो आपको हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, बैरियर्स क्रिएट करेगा. ये नया कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड हुआ है. एम आई क्लियर मधुस्मिता? ये कॉन्स्टिट्यूशंस में नया ऐड हुआ है. एम आई क्लियर? Thus, the main object of Article 301. बोलो. हेलो, Yes, sir. क्लियर है? हाँ, sir. Okay. Thus, the main object of Article 301 was obviously to encouraging the free flow of stream of trade and commerce throughout the territory of India. The word trade means buying or selling of goods, while the term commerce includes all form of transportation such as by land, air or water. Thus, Article 301 is important through ट्रेड एंड कॉमर्स. ओके, थ्री, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए आर्टिकल 301 इंपॉर्टेंट है. ट्रेड का मतलब क्या होता है? सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स विच टर्म ऑफ कॉमर्स इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज बाय लैंड और एयर और वाटर. ठीक है, जहां ट्रांसपोर्टेशन एयर, वाटर और बाय लैंड यूज करके करते हैं, तो ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये आर्टिकल 301 के अंदर में आता है. द टर्म इंटरकोर्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
द टर्म इंटरकोर्स का मतलब होता है फ्रॉम मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Thus, the word trade and commerce and intercourse cover all kind of activities which are likely to come under the nature of commerce. तो ये तीन जो movement of goods from one state to another state comes under trade commerce. ये जो movement of one goods from one place to another place जो मूवमेंट होता है, इस चीज को हम ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कहते हैं. ठीक है, जहां पर फ्री फ्लो ऑफ एक्टिविटीज of legal way of transferring good from one country to another is done, and this is also under article section 301. Now, Article 302 of Indian Constitutions explain the power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce, and intercourse. The Parliament may, by law, impose it. Such restrictions on the freedom of trade, commerce, or intercourse between one state and another, or within any part of the territory of India, as may be required in public in interest. Article 302 क्या है? आर्टिकल 302 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्लेन करता है द पावर ऑफ पार्लियामेंट का. पार्लियामेंट का क्या पावर है, क्या लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट में, वो आर्टिकल 302 में इंपोज होता है. कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो जो भी रेस्ट्रिक्शन बनता है फ्रॉम वन स्टेट इन बिटवीन द स्टेट, वो आर्टिकल 302 में आता है. ठीक है, just this article follows or implement by the government of India because of public interest. Main motto of utilizing this article 302 is just for requirement in the public interest. Okay, Article 303 deals with the restrictions of legislative power of the union and of the other state with regard to trade and commerce. It provides that Parliament shall not have any power to make any law giving any preference to any one state or other by virtue of entry relating to trade and commerce in any of the list 7th schedule. Okay, आर्टिकल 303 क्या करता है? आर्टिकल 303 एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है. लेजिस्लेटिव पावर एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है थ्रू लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें क्या करता है, वो ये देखता है दैट द पार्लियामेंट शैल नॉट हैव पावर टू मेक एनी लॉ गिविंग एनी प्रेफरेंसेस टू वन स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. What Article 303 deals with? Article 303 deals with legislative power. And what is legislative power? Legislative power shall follow those articles where the legislative power observe that the government should not give some extra preferences to any particular state. Every opportunities, every power should be equally distributed among the state. ये लेजिस्लेटिव पावर बनाता है. इसलिए आर्टिकल 303 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करते हैं अपने प्रेफरेंसेस के लिए, अपना वोट बैंक के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ कुछ स्टेट्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं तुमको पॉलिटिकल बात ये सब क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स फ्रूटफुल करने के लिए बहुत सारे स्टेट को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस देते हैं. लेकिन लेजिस्लेटिव पावर अगर उस स्टेट यूज करते हैं कि आई एम गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दिस फैसिलिटीज विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दिस अदर स्टेट, तो वो फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये लेजिस्लेटिव पावर काम करते हैं एक्शंस में. They can drag to the court. The government, central government, can be dragged to the court through utilizing this legislative power. This is Article 303. Am I clear, Madhusmita? हेलो. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है? No, sir. टुमारो. हाँ बोलो. Sir, Your voice is breaking. Your voice is breaking, Madhusmita. You can write it down. Your voice is breaking. Hello. Hello.
No doubt, sir. Okay, so tomorrow we will going to explain Article 304. From tomorrow, we're going to explain Article 304. Ma'am, the class will remain at the same time. Okay, 5:30. Okay, Madhusmita. Next class tomorrow we will have a next class at 5:30 p.m. only. Thank you. Have a good day.